Today we are going to discuss about periodic properties of periodic periodic properties periodic properties of 16, 17 and 18 group elements. ठीक है, उसमें इन ग्रुप 16, 17, 18 द इलेक्ट कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं हम? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और उसके बाद में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी है. उसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पॉइंट ये है कि इन ग्रुप 16, 17, 18 electronegativity decreases. Electronegativity decreases. Down the group. Electronegativity decreases down the group. Oxygen has the highest electronegativity next to fluorine. और उसके बाद में लिख सकते हैं halogens have very high electronegativity. Fluorine is the most electronegative element. उसके बाद में है ऑक्सीजन इन द पीरियोडिक टेबल. अब आते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द 16 and 17 electron gain enthalpy becomes in 16 and 17 group. Electron gain enthalpy becomes less negative down the group. Less negative down the group. और ये बोल सकते हैं इन 16 और 16 ग्रुप में इन 17 ग्रुप में क्या हो रहा है? फ्लोरीन हैज़ लेस negative electron gain enthalpy. Fluorine less negative electron gain enthalpy than of chlorine. ये क्यों होता है? ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम. ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कौन सा एटम? फ्लोरीन एटम. और अपन बोल सकते हैं इन 18 ग्रुप में ग्रुप इन ग्रुप 18 क्या हो रहा है? ग्रुप 18 में क्या हो रहा है? ग्रुप 18 में हमको ये दिख रहा है इन ग्रुप in group
18, इन ग्रुप 18 में क्या हो रहा है? ग्रुप 18 में हमको पता है दे आर नोबल गैसेस, नोबल गैस। ग्रुप 18 क्या है? नोबल गैस। और ये नोबल गैसेस का ऐसा रहता है, हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, हैव नो टेंडेंसी, have no tendency to accept electron because of their stable electronic configuration, stable electronic configuration, है ना? They have no tendency to accept electron because of their, so they have large positive, so 18 group elements, 18 group elements have large positive electron gain enthalpy. Large positive electron gain enthalpy. हम बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं, मतलब 16 ग्रुप वाले एलिमेंट्स, 16 ग्रुप के एलिमेंट्स को लोअर वैल्यू ऑफ ये ले सकते अपन, आयनाइजेशन, है ना? और कंपेयर टू 15, बिकॉज ग्रुप 15 elements have extra stability and due to their electronic configuration, and 16 as compared to 16, therefore this affect their value of electron gain enthalpy, they affect this value of electron gain enthalpy. और बाद में ले सकते हैं अपन फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ले रहे हैं अपन? 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, 18 ग्रुप की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन इज अ गैस, ऑक्सीजन क्या है? गैस, ऑक्सीजन गैस, while other elements are in the group they are solid at room temperature, है ना? ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे गैस है, और अदर एलिमेंट्स of this group are solid. और बोल सकते हैं ऑक्सीजन और सल्फर आर नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन एंड सल्फर क्या है? नॉन, या उसको हाँ नॉन मेटल्स। सेलेनियम एंड टेलुरियम आर न्यूक्लियोइड्स, सेलेनियम and tellurium are metalloids, while polonium is metal, polonium is radioactive elements, it is a radioactive
रिएक्टिव एलिमेंट विथ हाफ लाइफ है इसका 13.8, स्पेशल दिया है यहाँ पे इन्होंने 13.8 days. Melting and boiling point increases with increasing atomic number. फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 एग्जिबिट एलोट्रोपी, है ना, सारे एलिमेंट्स क्या एग्जिबिट करते हैं, ऑल एलिमेंट्स एग्जिबिट ऑलोट्रोपी। Exhibit allotropy, these are the physical properties of 16 group element। एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे, why there is a difference between, एक क्वेश्चन और यहाँ पे अराइज होता है, why there is large difference, why there is large difference between melting point and boiling point of ऑक्सीजन एंड सल्फर। ठीक है, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल, सल्फर एग्जिस्ट एज polyatomic like S8। ठीक है, the van der Waals forces of attraction between O2 molecule are, van der Waals forces are weak, है ना, हम लोग बोल सकते हैं van der Waals फोर्सेस क्या रहते हैं, वीक, van der Waals फोर्सेस आर वीक in O2, so relatively weak because of its size। and S8 मॉलिक्यूल में van der Waals फोर्सेस क्या रहते हैं, they are large, therefore due to their large atomic size, एसिड मॉलिक्यूल में ज़्यादा वैन डर वाल्स फोर्सेस रहते हैं, देयरफॉर क्या होता है यहाँ पे, इनके there is a much difference between melting and boiling point of oxygen and sulfur। ठीक है, और अपन एक हद ले सकते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ग्रुप 17 एलिमेंट्स, 17 ग्रुप के एलिमेंट्स जो है वो दे आर गैसेस, हैलोजेंस आर गैसेस, हैलोजेंस में भी फ्लोरीन एंड क्लोरीन ये दोनों क्या है, गैसेस। ब्रोमीन इज लिक्विड एंड आयोडीन इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। F2 क्या है, F2 इज येलो, Cl2 इज greenish yellow, Br2
रेड एंड I2 इज वायलेट। ऐसे कलर्स हैं इनके। फ्लोरीन और क्लोरीन, ये दोनों फ्लोरीन और क्लोरीन दे रिएक्ट विथ वाटर। फ्लोरीन और क्लोरीन रिएक्ट होते हैं वाटर के साथ। ब्रोमीन और आयोडीन जो है, ब्रोमीन और आयोडीन, दे आर स्प्रैंगली soluble in water. They are sprangly soluble in water. Sprangly soluble in water and soluble in various organic solvents such as chloroform, carbon disulfide, है ना। ये क्लोरीन, दे आर soluble in, किस में soluble है वो, CS2, कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म, carbon tetrachloride, etc. The bond dissociation enthalpy of halogen molecule follows this order. Bond dissociation enthalpy. Bond dissociation enthalpies of halogen follow following order: Cl Cl, Br Br, F F, I I. Fluorine is less negative electron gain enthalpy. Fluorine has less negative enthalpy than chlorine because size of fluorine is small size. Chlorine is somewhat big size. So क्या होता है, there are strong interelectronic repulsion in the small 2p orbitals of fluorine. So incoming electron does not experiences much attraction. Thus fluorine has less negative electron gain enthalpy than chlorine. ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन। एक और पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ F2 कितनी है, 158.8 किलो जूल्स पर मोल। लोअर देन Cl2, 242.6 किलो जूल्स पर मोल। क्यों ऐसा क्यों है? फ्लोरीन का एटॉमिक साइज क्या है? फ्लोरीन का एटॉमिक साइज क्या है? स्मॉल एटॉमिक size. Lone pair on each fluorine atom in F2 molecule are so close together then so they strongly repel each other and make F bond क्या करता है? weak करता है। Lone pair on fluorine atom, है ना। Does it require less amount of energy to break? In Cl2 molecule क्या हो रहा है? Lone pair on each chlorine atoms. Lone pair are at a large distance, and the repulsion is negligible. Therefore, bond dissociation enthalpy of F2 is lower than Cl2 due to the रिपल्शन ऑफ लोन पेयर। ठीक है, इस तरह से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़।